तो फेयर वैल्यू गैप्स, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप्स, सीबी और बीसी होते क्या हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग में, और इन्हें यूज़ करके आप कैसे बेनिफिट पा सकते हो, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम इन्हें कवर करते हैं। तो फेयर वैल्यू गैप्स होते क्या हैं? फेयर वैल्यू गैप्स 3 कैंडल्स की कंसिस्ट करते हैं। ओके, अगर बेरिश हो बुलिश हो, नाउ सी 1 2 3 कैंडल्स, इट हैज़ 3 कैंडल्स। ओके, ऑन सेम ऑन द बुलिश साइड। ओके, तो अगर आपने फेयर वैल्यू गैप्स ढूंढने हैं, ये एक लिक्विडिटी एरिया होते हैं जिसे इंटरनल रेंज लिक्विडिटी बी कहते हैं। ओके, नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस एंड व्हाट डज इट डू? ओके, व्हाट इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस? तो फेयर वैल्यू गैप्स आर बेसिकली लिक्विडिटी। ओके, तो ये मार्केट में जब इनएफिशिएंसी, ओके, सम काइंड ऑफ यू कैन सी इम्बैलेंसेस और गैप्स कम, ओके, तो इन्हें फेयर वैल्यू गैप कहते हैं और ये लाइकली टू बी फिल्ड वेरी सून। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि लिक्विडिटी होती है, मार्केट में वापस इस एरिया को मिटिगेट करना होता है। सो फेयर वैल्यू गैप्स को ढूंढना है तो आपने जो फर्स्ट कैंडल होगा उसके एंड को आप पकड़ोगे, end of this candle, and the last candle, okay, upper wick, catch that one. So in middle, if you can see, ये middle में जो है इन्हें फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। this area, this gap, okay, now this is not filled with these, ये 2 कैंडल्स ने फिल नहीं किया विक को, so ये गैप रह चुका है इस कैंडल में। okay, now this area will be filled। okay, now if you just look at this side, okay, now high of that candle and that candle is low, so here it is fair value gap। okay, so this is fair value gap। okay, the middle gap जो आपको अभी आइडेंटिफाई करना आ चुका होगा। so if you just check some examples, so if you look at here, we have fair value gap, the upper wick of this candle, 1 2 3, the third candle, okay, there is a gap and you can see the gap was filled again। okay, and then again coming to this candle, 1 2 3, 3 candles consist, low of this candle, high of this candle, this is the gap and you can see it was filled again। okay, and just like that you will find a lot। फेयर वैल्यू गैप इनवैलिड इस तरह हो सकते हैं। ओके, अगर हम लोग जो ये फर्स्ट बॉडीज विक है और लास्ट बॉडीज विक, ओके, अगर इनमें इस तरह एरिया ना रहे, नाउ सी इफ वी जस्ट चेक आउट, दिस इज फिल्ड। ओके, नाउ यू कैन सी देयर इज नो गैप, बोथ बॉडीज विक, ओके, फिल्ड ईच अदर, सो ओवरलैप्ड हो चुका है, इससे ये फिल हो चुका है। नाउ दिस इज नॉट अ वैलिड फेयर वैल्यू गैप, ऑन द अदर हैंड इट इज, ओके, because it is not overlapped। so what will we anticipate? This is the gap and sooner or later it will, the next candle or several next candles, okay, will fill this area। now there are things that sometimes it will fill this, only touch it, ये फेयर वैल्यू गैप की गैप को सिर्फ टच करेगा, and sometimes it will hit the middle point, that's the premium discount levels, and sometimes it will full fair value gap, okay, fill it, so you can check through all। so the next thing we are covering is SIBI, sell side imbalance, buy side inefficiency, और simply put इसे कहते हैं bearish fair value gap। तो इसमें होता क्या है कि आपकी डाउन क्लोज कैंडल्स, ओके, these areas, now this gap, this is known as what, SIBI। okay, so SIBI में ये होता है कि this area, this particular area, this will be filled, and once it gets filled, okay, once it gets filled, then it will again come down to the downside। after filling this, we anticipate for the market to come further down। so this is the quality of SIBI, and on the other hand we have buy side imbalance and sell side inefficiency, जिसे BC कहते हैं, और simply put
a bullish fair value gap. तो इसमें होता क्या है, आपको 3 bull candles, okay, or simply to the bullish side, okay, you will see, and you will see an imbalance or a fair value gap. So this is a BC, okay. Simply ये market, this area will be filled and anticipated that the market will continue higher rather than coming down, okay. So this is the qualities of BC and CB. Now if you look here, we have example of BC, okay. You can see from here the market was shifted, okay, and broke the high and gave a fair value gap, simply as BC और a bullish fair value gap. मार्केट वापस आई, इसे मिटिगेट किया, एंड आफ्टर दैट इट हैड अ बुल रन, ओके. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ए BC. So on the other hand, we have example of SIBI, okay, or simply a bearish fair value gap. So you can see last low was broken right here, and we see a fair value gap, and market mitigates almost the midpoint of this, and then after that market comes down to the bearish side again once more here, and then filled into the downside. Covering is inversion fair value gap. Inversion fair value gaps होते क्या है, अगर आपकी fair value gap, okay, this fair value gap as you can see it as CB, okay, अगर ये next candle, okay, does not respect this fair value gap and does not come down, तो उसके बजाय it will always give you an inversion, okay, inverse value gaps, which will also a BC, okay. तो आपको वो गैप मिलेगा. So this will be inverse fair value gap, okay, the inversions. So what will it do? Basically the point of this thing and function is that it will be used as BC, okay, not CB now, but it will be far more better than a simple fair value gap. Now it is more stronger, okay. So we are anticipating for the market to dip into this fair value gap and then pump higher. So this is the inversions, okay, inversion fair value gap. I hope so you got it. So let's check one more example. So we have some examples right over here. You can see this is the bearish fair value gaps, and it was not respected right here. तो उसके बजाय what can we see, a next fair value gap, okay, forming as inversions, okay. You can see this area is fulfilling that. So let's check this out. If it got filled, okay, market inverse value gap बनाती है and then it goes higher. And then one more thing to remember, यहाँ पे एक और inverse value gap जो आपका BC बना है and it was not respected. So after that what again an imbalance comes, okay. So you can see the imbalance and it becomes as CB, okay, bearish value gap, and market takes this as a resistance, as a level to come down, and it comes down to the same inverse value gap, okay, and fills that, and after that it pumps it higher. So this was the great example. I hope so you people found this video helpful. I'll see you in the next video. Until then, take care.